Classes, good afternoon. So we shall be starting from the preparation of what? Funds flow statement. लास्ट क्लास में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फ्लो ऑफ फंड्स कैसे होगा। फ्लो ऑफ फंड्स कहां पर होगा? वहीं पर होगा जहां पे जो आइटम्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो करंट एसेट हो, करंट लायबिलिटी हो, फिक्स्ड एसेट हो, फिक्स्ड लायबिलिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों आइटम यानी कि डेबिट और क्रेडिट वाले आइटम्स का नेचर अपोजिट होना चाहिए। नेचर अपोजिट कहने का मतलब कोई एसेट और कोई लायबिलिटी नहीं। नेचर अपोजिट कहने का मतलब अगर दोनों एसेट ही है तो एक फिक्स होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करूं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर हमने शेयर को इशू किया कैश लेकर, एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एक जो कैश या बैंक है वो करंट एसेट है, शेयर कैपिटल फिक्स्ड लायबिलिटी है, इसलिए फ्लो ऑफ फंड्स होगा। लेकिन अगर यही हम लोगों ने शेयर इशू किया होगा अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता, वहां पे कोई फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है और शेयर कैपिटल भी फिक्स्ड लायबिलिटी है, दोनों का नेचर फिक्स है, इसलिए फंड का फ्लो नहीं होगा। As we all talked about how to prepare a fund flow statement, pass through three different phases. One is the preparation of schedule of working capital changes. Number two is to find out the funds from operation or loss from operation, whatever the case may be. And finally, you need to prepare the fund flow statement, wherein you have to show the sources of funds and the application of funds. Sources of funds means from where the funds have been generated by the business during the period under consideration. And application of funds means where the funds have been used, where the funds have been used. Right. Now, today we shall be starting with schedule of working capital changes. Now, what is working capital? What is working capital? Working capital refers to that capital which is required by the business in meeting its day-to-day operations. Day-to-day business activities को meet करने के लिए जो funds चाहिए, जो capital चाहिए, that capital is referred to as working capital. Working capital has two concepts. One is gross working capital and the other one is net working capital. When you say gross working capital, it represents only the value of current assets. But when you say net working capital is actually the difference between the current assets and the current liability. And how would you identify that whether we are talking about gross working capital or net working capital? It is very simple. क्या है simple में? कि we need to consider only the working capital. If working capital is written, we should know that it is net working capital. And we are preparing schedule of working capital changes. Preparing what? Schedule of working capital changes. Means we need to have both current assets and current liabilities. Now, why do we prepare the schedule of working capital changes? We prepare a schedule of working capital changes to know what is the absolute change in working capital. Has our working capital increased or it has decreased in the current year in respect to the previous year, right? So the performer for preparing the schedule of working capital changes, what is ARR? Average rate of return is what? How would you calculate it? Average rate of return is equal to average profitability by
Average investment into 100. Into 100 also. Now, schedule of working capital changes. Huh? Schedule of working you were absent in the previous class. Why, Kushi? For updating my P card. Right, good. Then, did you look at the video? Yes, sir. Then, you could understand what I taught in class? Very good. Huh? The schedule of working capital changes. How would you prepare it? First of all, you have a column named particulars. Column named what? Particulars. Followed by the data for the previous year. Then by current year. Then you have plus sign, and finally you have minus sign. So overall, how many columns you are having? 5. You are having 5 columns. So in particulars, we shall be starting with current assets. Starting with what? Current assets. Give few examples of current assets. Give few examples of current assets. Right. So I'm writing few assets. One is bill receivable, BR. Other is debtors. As Kushi mentioned, prepaid expenses is also a type of current asset. And what else? We could have accrued income. Accrued income means income which is due but has not been, income which is due but not has been received. It has not yet been received. Now, other assets you are knowing. Okay, I've mentioned few of the important ones. Now, you will be provided with 2 years values. 2 different year values. One might be previous year and the other one is for the current year. So write down the value of all these current assets for both these years, for previous year as well as current year. Right, class? Yes or no? Now you total it. Now you need to do what? The work of totaling. Total of current assets for the previous year and total of current assets for the current year. CY stands for current year. PY stands for previous year. Say for example, if we are in 2022, the data relating to 2022 will be current year and data relating to 2021 will be previous year, right? Now, what about these 2 columns? Plus and minus. Suppose in case of current assets, the figures in current year is more than the figure in previous year. The figure in current year is more than the figures in previous year in case of current assets. Say for example, bill receivable in the previous year was 2000 and in the current year it is 2500.
So which year is bigger? Current year. By how much it is bigger? 500. So current assets, an increase in current asset will bring about an increase in working capital. अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट एसेट बढ़ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा ना. तो इंक्रीज वाले कॉलम में यहां पर लिखना हो, यहां पर माइनस में कुछ नहीं लिखना हो. राइट? यस और नो क्लास? Now sometimes you would find that the previous year value in case of current year is more than the current year. Previous year का value current assets में current year से ज्यादा है. अब मान लीजिए डेटर्स पिछले साल 9,000 था, इस साल 7,000 हो गया, तो डेटर्स क्या हो गया? डेटर्स घटा या बढ़ा? प्रीवियस ईयर 9,000, करंट ईयर 7,000, बढ़ा या घटा? घट गया. तो जब करंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल घटेगा. तो अगर ये सिनेरियो होगा तो माइनस साइन में लिखेंगे और यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा. क्लियर क्लास? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं. ये था करंट एसेट्स का. नाउ करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज. अब करंट लायबिलिटी में हम लोग क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, बिल्स पेएबल लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं. यस और नो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा. और भी करंट लायबिलिटी हो सकती है जिसको कि आप पहचान के लिख लेंगे यहां. अब क्या होगा? इसका भी दोनों ईयर का वैल्यू दिया हुआ होगा. यस और नो क्लास? और अगर कोई करंट लायबिलिटी होगी तो उसको भी लिख लेना है. अब जैसे हम लोगों ने करंट एसेट्स को टोटल किया, ठीक उसी तरीके से करंट लायबिलिटी को भी क्या करेंगे? बताएं, क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, टोटल करेंगे. क्लियर क्लास? कोई दिक्कत? अब क्या है? प्रीवियस ईयर का करंट एसेट, प्रीवियस ईयर का करंट लायबिलिटी, इसमें से माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल मिलेगा. यस नो? करंट ईयर का करंट एसेट, करंट ईयर का करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल मिलेगा. यस नो? अब लेकिन कुछ और पॉइंट छूट गया. अब सपोज करें करंट लायबिलिटी के केस में करंट ईयर का वैल्यू प्रीवियस ईयर से बड़ा है. कॉमन सेंस यूज करना है. करंट ईयर में करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर से बढ़ गया. द करंट लायबिलिटीज in the current year has gone up in comparison to the previous year. तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड, घटेगा. क्या होगा? घटेगा. तो जितने से करंट ईयर का वैल्यू बड़ा है प्रीवियस ईयर से, तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, तो माइनस पे लिखेंगे. कहां लिखेंगे? माइनस. क्लियर है? यस और नो? नहीं आया सर. रोल नंबर 19 क्या आ गया? क्यों माइनस पे लिखेंगे? अगर करंट लायबिलिटी का करंट ईयर का वैल्यू बड़ा है प्रीवियस ईयर से, तो क्योंकि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन में लिखेंगे. अगर प्रीवियस ईयर का वैल्यू बड़ा है करंट ईयर से, यानी कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट लायबिलिटी इस साल घट गई. इस साल क्या हो गई? घट गई. तो जब करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो किस साइड लिखेंगे? पॉजिटिव साइड. यहां पे लिखेंगे, यहां पर कुछ नहीं लिखता. क्लियर क्लास? यस और नो? आगे बढ़े क्या हम लोग?
अब क्या करना है देखिए, अब मेन काम ये है, अब आगे का काम, ये वाला जो कॉलम है जो टोटल था उसको करने के बाद दो तीन लाइनें छोड़ देंगे, बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखते रहना ध्यान से। जैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है वैसे ही इसको भी बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करते हैं लेजर, राइट। उतार लेना बाद में, पहले देख लो समझ लो। जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं, बड़े वाले छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर लाते लाते हैं कि नहीं लाते। अब सपोज करो कि प्लस साइड में अमाउंट है 8,000, 4,000, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, रैंडमली लिख रहे हैं 3,000, और इधर में है 7,500। तो कौन बड़ा हुआ? प्लस। तो इधर करेंगे 8 4 12 और 3 15। माइनस में भी कितना होना चाहिए? माइनस साइड में भी कितना होना चाहिए? लेकिन है कितना? कितना और ऐड करेंगे? कितना और ऐड करेंगे? 7,500। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा साइड बड़ा है, प्लस वाला माइनस वाला? प्लस वाला। मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। ये सुनो, कितने से बढ़ा भाई? 7,500 से बढ़ गया। मतलब क्या होगा, ये जो करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल यहां पे लिखेंगे ये, और प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल लिखेंगे ये, तो इन दोनों में करंट ईयर का वैल्यू प्रीवियस ईयर के वर्किंग कैपिटल से ज्यादा होगा। कितने से? 7,500 से। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये मतलब अगर आप इसको ए लिखें और आप आओ इसको बी लिखें, तो यहां पर क्या होगा, सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। सी बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब ये क्या हो सकता, या तो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आ रही बात समझ में? या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, नहीं तो वर्किंग कैपिटल। आप कब समझेंगे कि इंक्रीज करेगा? जब प्लस वाला साइन बड़ा होगा, माइनस वाला साइन छोटा होगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब बैलेंसिंग फिगर माइनस पे मुझे लिखना पड़े तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा। डिक्रीज कब करेगा वर्किंग कैपिटल? जब माइनस का साइन बड़ा होगा, या दूसरे शब्दों में बैलेंसिंग फिगर किधर लिखना पड़े? पॉजिटिव साइड, प्लस साइड में लिखना पड़े, तो ये इंडिकेट करेगा कि मेरा प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल घट गया, डिक्रीज इन। क्लियर क्लास? यानी कि ए माइनस बी प्रीवियस ईयर या फिर करंट ईयर, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? बैलेंसिंग फिगर के बराबर होगा हमेशा, राइट। और ये जो आप अमाउंट लिख रहे हैं, ये इसके सामने लिखाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। राइट क्लास? आया समझ में?
रोल नंबर 4। चलो क्वेश्चन लिखो तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर From the following informations, prepare a schedule of changes in working capital. From the following informations, prepare a schedule of changes in working capital. बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा बनाइए, लेकिन अमाउंट कॉलम में दो डालिएगा। अमाउंट कॉलम में दो ईयर का इसमें वैल्यू डालना है, एक करंट ईयर का, दूसरा क्या प्रीवियस ईयर का। अमाउंट वाले कॉलम में पहले में लिखिए 2006, दूसरे में 2007 लाइबिलिटी साइड, और उसी तरीके से एसेट साइड में भी 2006 2007। अब पहले आप लोग पूरा लाइबिलिटी साइड लिख लीजिएगा। कैपिटल, पहले आइटम्स लिख लीजिए। कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना? 6 हो गया ना? ऊपर नीचे करके नहीं ना लिख दिए हैं। फिर से सुन लीजिए। कैपिटल, जो सीक्वेंस है वही, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब 2006 का अमाउंट लिखिए। 18,50,000, 14,78,000। 78 मतलब समझते हैं ना? 12 लाख, 4 लाख, 14 लाख और 2 लाख। टोटल अमाउंट लिख लीजिए 65,28,000। अब 2007 में लिखिएगा 21 लाख, 21 लाख, 17,64,000, 17,64,000, 9 lakhs, 6,80,000, 12,20,000 और 1,80,000। Total amount is 68,44,000. 68,44,000. एसेट साइड में लिखिएगा गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, sundry debtors, bills receivable, बैंक, कैश। कितना आइटम हुआ टोटल? 9 आइटम हुआ क्या? फिर से मिला लो। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक और कैश। अब 2006 में लिखिए 6 लाख,
18,50,000, 18,50,000, 4,74,000, 1,94,000, 74 मतलब 74, 94 मतलब 94, 8,26,000, 12 lakhs, 8 lakhs, 5 lakhs and 84,000. I am repeating the amount. 6 lakh, 18,50,000, 4,74,000, 1,94,000, 8,26,000, 12 lakh, 8 lakh, 5,000, sorry 5 lakh और 84,000. टोटल अमाउंट इज 65,28,000. अब 2007 का फिगर्स लिख लीजिएगा. 6 lakhs, 22 lakhs, 5,24,000, 1,94,000, 7,24,000, 12,80,000, 12,80,000, 80,000, 12,80,000, 7,21,000, 7,21,000, 4,83,000 और 1,18,000. इसका टोटल है 68,000, सॉरी 68,44,000. मैं अमाउंट फिर से बोल दे रहा हूं, मिला लीजिएगा. 6 lakhs 2007 का एसेट्स का 6 lakhs, 22 lakhs, 5,24,000, 1,94,000, 7,24,000, 12,80,000, 80, 7,21,000, 4,83,000, and finally we have 1,18,000. The total of the assets for the year 2007 is 68,44,000. With the information which you wrote down just now, you are required to prepare the schedule of working capital changes. क्या बनेगा?
Will you be able to solve it or not? First of all, identify all the current assets and all the current liabilities. तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? Provision for taxation is also a current liability. What you should note and remember is कि अगर टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाहर नहीं दिया गया है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर नहीं दिया गया है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? वो करंट लायबिलिटी। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड लायबिलिटी हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो अभी जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, क्या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर दिया गया तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को कौन सी लायबिलिटी मानेंगे? करंट लायबिलिटी मान रहे हैं तो कहां दिखाएंगे? कहां दिखाएंगे? शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। किसमें दिखाएंगे? शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। क्या बनेगा? और करंट एसेट्स में क्या क्या है? कैश, बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, यही 5 है ना। बच गया क्या क्या? गुडविल बच गया, फर्नीचर फिटिंग्स बच गया, प्लांट मशीनरी बच गया और लैंड, और 4 बच गया। टोटल आइटम 9 था ना मेरे ख्याल से। 9 में से 5 को हमने करंट एसेट भी ले लिया, बच गया 4। तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, चलो गुड। हम्म,
राइट क्लास, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीमिंग नाउ।